Hello, how are you? So, class, we have completed one unit. It was Drugs and Cosmetics Act. I repeatedly told you guys that Drugs and Cosmetics Act is one of the most important legislation in the field of pharmacy. Okay? So, first of all, I want to say you what kind of question might come from this earlier unit. First of all, sometimes question may come to write down the objectives of Drugs and Cosmetics Act. Then they may ask you about the mainly the duties and powers of drug inspector. What are the qualifications of drug inspector? Then sometimes question come write down the this one uh, uh, drug sale process according to Drugs and Cosmetics Act. Okay, short question comes regarding the schedules. Question may ask this way: what do you mean by schedule C1, schedule X, schedule A's? Okay, so many short type question come from this chapter, and long type question may also ask. Okay, so when we will meet physically, maybe from 25th we are going to meet in college, so in that time I will explain properly about this act. Okay, so next, today I am going to discuss a new unit. It is Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Okay, before going to the act, you should know the terms related to this act. The first term what we got here is narcotic drugs. What do you mean by narcotics? Narcotics drugs क्या होता है? So very simple thing, but term is different, that's why it is unfamiliar to you. But when I am explaining this term, then you will know that it's a known substance to you. Okay, so narcotic drugs means these are the drugs which are used to reduce pain. This kind of drugs are generally called analgesics. Okay, but it is analgesics drugs are different type. One is narcotic, one kind is narcotic, another is non-narcotic. Here we are discuss about the narcotic drugs. Narcotic drugs are one kind of analgesics which are mainly obtained from the opium or opium-like substances. Okay, so narcotic drugs क्या है? narcotic drugs है जो ड्रग पेन रिड्यूस करने के लिए हम लोग लेते हैं, लेकिन वो लोग मेनली ये ड्रग ओपियम ओरिजिन है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन. ओके ओके, सो आर यू गेटिंग दिस definition of narcotic drugs? Just keep it one thing. Narcotic drugs are the drugs which are used to reduce pain. Okay, next is psychotropic substances. What do you mean by psychotropic substances? Psychotropic substances are the substances which causes alteration of our mood. Okay, alteration of our brain function. Okay, it gives well-being to our brain function. ओके, तो साइकोट्रोपिक ड्रग ऐसा होता है जो हम लोग को ब्रेन फंक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं. इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. ओके, सो साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर द ड्रग्स व्हिच यूजिंग दिस यू कैन गेट ए बेटर ब्रेन फंक्शन, बट ज़्यादा लेने से ये प्रॉब्लम हो जाता है. ओके, सो दीज आर वेरी डेलिकेट ड्रग्स. दैट मीन्स both the narcotic and psychotropic drug, if you take it regularly, then addiction occurs. Okay, addiction occurs, it will give problem. Okay, अगर एडिक्शन हो गया तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं. अगर अल्कोहल का एडिक्शन होने से क्या होता है, हम लोग को हमेशा लेना पड़ता है.
So narcotic, now you are getting what do you mean by narcotic and psychotropic substances. You might want to know what are the psychotropic substances. For example, cocaine, heroin, then cannabis. Cannabis means भांग. जो भांग भांग जो वो जो शिव बाबा का जो प्रसाद होता है ना भांग सरस, ओके, कोका लीव्स, hemp. These are psychotropic substances. So now question comes, why did these act bring into existence? क्यों लाया था ये एक क्यों लाया था? Okay, question might be come to your mind, क्यों लाया है ये drug? देखो, so I already told you this kind of drugs, narcotic drugs and psychotropic drugs produces addictive effect. That means it causes dependence. Okay, अगर तुम ये ड्रग लेते रहोगे तो तुम्हारा डिपेंडेंस हो जाएगा, तुम एडिक्टेड हो जाओगे. तो इसीलिए जनरली दिस काइंड ऑफ ड्रग्स आर abusing drugs, means this kind of drugs we use abuse from. Okay, that's why to regulate this kind of drugs this act brought. Okay, तो ये ड्रग को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए ये जो एक्ट लाया था 1985 में. क्वेश्चन आ सकता है उससे पहले कुछ एक्ट नहीं था क्या? इतना दिन मतलब हम लोग ने कब इंडिपेंडेंस मिला था? 1947. सो 1947 के पहले ऐसा कुछ मतलब 1947 से 85 तक कोई एक्ट नहीं था क्या ये रेगुलेट करने के लिए? उस टाइम पे ऐसा ड्रग नहीं लिया था क्या? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है शायद तुम लोग का माइंड में. यस, in that case I am going to tell, earlier also there are two acts are there. One is Opium Act 1857, another is Dangerous Drugs Act 1930. Under this drug, these substances were regulated. Okay, but later government realized that it is not possible to regulate with this act. We should need another act. Okay, that's why they brought this act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Okay, so from this discussion you may know what is the objective of this act. Okay, so objective of this act is to regulate the cultivation, manufacturing, sale of all kinds of narcotic and psychotropic substances. Okay, so generally these narcotic drugs are plant origin. I told you, जैसे cannabis, जिसको आसामीज में हम लोग बोलते हैं भांग, cannabis, coca leaves. Okay, so these kind of substances are we do cultivation. So कैसे कल्टीवेट करने के लिए भी कुछ रेगुलेशन मानना पड़ेगा. मतलब ज़्यादा कल्टीवेशन होने से भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड कल्टीवेशन करने के लिए ये एक्ट लाया था. इससे हमेशा हम लोग तुम लोग को भी पता है, देखते हैं कि भांग ऐसे ओपनली नहीं बिकते हैं, इसको ब्लैक मार्केटिंग होता है या नहीं? क्योंकि ये एब्यूजिंग ड्रग. जनरली we this drug have some good therapeutic effect, but we use as a in abuse form. Okay, that's why government had to think to regulate this kind of drugs. Okay, so today I am just discussing the basics related to this act. First, to discuss about the what do you mean by narcotic drugs and what do you mean by psychotropic drugs. One thing I want to add with narcotic drugs not only reduces pain, it also induces sleep. अगर ये नार्कोटिक ड्रग्स लोगी तुम्हारा पेन ही कम नहीं होगा, तुम्हारा पूरा नींद भी आएगा. ठीक है, सो साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या करेगा? तुम्हारा मूड को अच्छा बनाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको, ये लेने से तुमको अच्छा गुड फील होगा, ज़्यादा गुड फील होगा. इसलिए क्या करते हैं हम लोग, या और ज़्यादा गुड फील होने के लिए हम लोग और ज़्यादा ले लेते हैं, और जब और ज़्यादा ले लेते हैं प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. ठीक है, सो इसको पूरा
ये दोनों सब्सटेंस को पूरा जस्ट वन थिंग कीप इट माइंड, to regulate these two kind of drugs, this act came into existence. I will provide the material. In material you will get the objective in a point wise, which you have to write in exam. In video generally we are making video na. In video we are trying to elaborate or the topic, we are trying to elaborate the topic to understand you, okay, to better understand you, but don't use the lines what I am telling in paper. So in exam you have to write a standard language, so that's why we generally give you the materials. In that materials you get the note, you get the means proper definitions and other thing. Keep in mind, video we are only making to get the thing interesting and to know this, to understand that topic, okay. So in this act what is given, first of all क्या पहला कुछ यहाँ पे डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन में कौन मतलब डेफिनेशन में दिखाएंगे मतलब ये जो कैनाबिस क्या होता है, कोकालिप्स क्या होता है, हेम क्या होता है, सरस क्या होता है, ये सब के बारे में, इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन, पहले ये एक्ट में कुछ डेफिनेशंस मिलेगा, उसका बाद गवर्नमेंट का अथॉरिटी ने कैसे रेगुलेट करते हैं, मतलब ये सब ये ड्रग का बिजनेस करने के लिए, उसको सेल करने के लिए और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ लाइसेंस चाहिए, ये लाइसेंस गवर्नमेंट कैसे देते हैं उसका बारे में लिखा है। उसका बाद अगर ये एक्ट अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग का पेनल्टी होगा, पनिशमेंट होगा, उसके बारे में भी दिया है ये एक्ट में, ठीक है। सो we'll discuss properly in the next class, okay. So right, for today's class I am just giving the basics of this act, okay. So today we have just discussed about what are the basic principles behind the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, okay. Again I am request all of you, please do watch the video, not only mine, for other faculties also, okay, and go through the materials, okay. So and good news is we are going to meet very soon on 25th, maybe from 25th of November, okay. So thank you.